Question number 16. If the length of the base vector of the ellipse is 1 upon 2, then the value of alpha, which belongs to 0 to pi, is the radius rectum of this ellipse. Yeah, x squared sine squared alpha plus y squared. So basically what? X squared upon c squared plus y squared upon c squared equal to 1. That's the ellipse. Okay, so इसका latest rectum, which is 2b squared upon a. So 2 into, well, this thing is b squared c squared upon a. That's just s squared upon c squared. So that's just 2c power 4 upon s squared. ये जो है latest rectum, this thing is 1 upon 2. Okay, cool. So 4c power 4 equal to s squared. That's what you're saying. Okay, cool. Isn't that what you're saying? Yeah. Wait, no, 2b squared upon a, not a squared. So square root of this thing. Right. So what it says is that 2c squared upon s upon c. So it's going to be cubed. That thing is 1 upon 2, huh? So 4c cubed equal to s. This is bad. The value of alpha belong to 0 to pi is maybe like changing it somehow. Ugh, not good. Okay, 0 to pi. 4c cube minus s. इसका अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ तो क्या होगा? This will just be 12c square times negative आप साइन आ जाएगा, right? क्योंकि कोसाइन का डेरिवेटिव and this negative cosine like that. So cosine common is negative cosine common is just 12c sine, yeah, plus 1. And बोला है कि alpha belongs to 0 to pi, so of course, yeah, this is just negative c into 3 into sine 2 alpha, because, yeah, sorry, 6 into sine 2 alpha plus 1. Okay, so no, the derivative does deviate quite a lot. तो वो सही नहीं होगा. सही तो किया ना अपन ने. Oh shit, ये c squared upon s squared होना चाहिए था. ये s squared upon c squared क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? Right, so 2b squared upon a. Then this is not correct. It would just be 2c और s ऊपर जाएगा तो 2sc, or I should say mod of 2sc. That is कहाँ पे गया? But anyway, I mean like ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते ना. ये हो सकता है, इनफैक्ट हो सकता है क्योंकि कोसाइन स्क्वायर अल्फा है तो या वो खुद नेगेटिव हो सकता है. इट्स इक्वल टू 1/2 बेसिकली. But that just means the sine 2 alpha का mod जो रहेगा, that just, yeah, so sine square 2 alpha it's equal to 1/4, which is sine squared of 30 degrees, sine squared of pi by 6. So 2 alpha is n pi plus minus pi by 6. There we go. Alpha is just n pi by 2 plus minus pi upon 12 like that. So अगर मैं ग्राफ करना चाहूँ तो कैसा रहेगा? मिनिमाइज करो. So pi upon 12 काफी छोटी सी क्वांटिटी है ना, राइट? तो pi upon 2 यानी कि ये 4 पॉइंट्स और प्लस माइनस pi upon 12 यानी कि ऐसा और ये काइंड ऑफ लाइक दिस. तो या अपने को 8 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि अल्फा जो है वो 0 to शिट अल्फा गोस फ्रॉम 0 to pi ओनली. तो नहीं, सिर्फ अपने को 4 पॉइंट्स मिलेंगे. कूल. सो या वेट, अपने को सिर्फ, हाँ ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई अपॉन 12 हो सकती है. पाई माइनस पाई अपॉन 12 यानी कि 11 पाई अपॉन 12 भी हो सकती है, जो कि इसमें नहीं है. अदरवाइज पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 12 यानी कि 6 पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12 हो सकती है, राइट. 7 पाई अपॉन 12 भी हो सकती है. सो जस्ट सी और ए ही है जो कि ऑप्शन है. सो 16 का ए एंड सी. So question number 16, AC. Question number 17. 17 है a line segment of length something units has one of its end on x-axis, another end on y-axis. 7 units, okay. X-axis, y-axis, one end on the x-axis, one end on the y-axis. A point P divides this line segment in the ratio, right? तो वो एक ladder गिर रही है टाइप, वो टाइप का क्वेश्चन है, okay. Point P divides the line segment in the ratio 3:4. The locus of P will be an ellipse with eccentricity something. Come on, seriously. So, ठीक है, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो.
then जो p है that divides the line segment in the ratio of 3:4. So let's say ये जो है वो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, something like that. Well, this thing is just x, 0 and this thing is just 0, y. In fact इनको x y के अच्छा let's say a और b यूज करते हैं, right? Not really, because I mean this is just 4 and 3 exactly, so it's not good. Like okay, तुम ये निकाल सकते हो कि ये क्या है, और फिर you know कि a squared plus b squared is always 7 squared and stuff, but ठीक है ना, करते हैं. squared plus b squared is 7 squared. Okay, और ये जो point रहेगा that will just be so 3 times of this point, 4 times of this point, so it's going to be 4a, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, so 4a upon 7 and this thing is going to be 3b upon 7. So 7 upon 4x, right, क्योंकि ये चीज़ x है, इसका स्क्वायर प्लस 7 upon 3 y squared equal to 7. Cool. So basically x squared upon 4 squared, okay, और यहाँ पे से एक 7 भी आएगा, I think नहीं, 7 ऊपर रहेगा, so 4 squared 16 upon 7 like this, plus y squared, yeah, that's just the way it is. If it makes sense. 9 upon 7, there we go. ठीक है ना, तो b squared upon a squared that is 9 upon 16, that's equal to 1 minus e squared, so e squared is 1 minus 9 upon 16, which is 7 upon 16 I think. So e is square root 7 upon 4, there we go. तो क्या करना है अपने को, so locus of p is an ellipse with an eccentricity 7 upon 9. Why is this 7 upon 9? How is this 7 upon 9? b squared upon a squared, that is 9 upon 16, that's equal to 1 minus e squared, so e squared is just, it's gonna be 7 upon 16, come on. So ये तो सही नहीं है. Length of the major axis is a, sorry, it's 8. Huh? Length of major axis, this 2b squared upon a, right? So 2 into इस चीज, ये तो already okay, तो ये equal to 1 था, तो फिर 2b squared upon a यानी कि कैसे होगा, it's just going to be 2 into ये सारी चीज गंदी सी 9 upon 7 upon a, तो a basically यहाँ पे क्या है, it's just 4 upon square root 7. इसमें square root 7 वगैरह तो आ ही नहीं रहा है, तो this does not make sense. No. Length of the major axis is 8. No way. None of these. So 17p, even though, like, okay, this is very weird. How does this, oh no, it should be 7 squared. Now it makes sense. Okay, तो ये पूरा गड़बड़ है थोड़ी सी इसमें. This ellipse is in fact just x squared upon 16 plus y squared upon 9 equal to 1. So yeah, in that case 1 minus e squared is 9 upon 16, so e squared is just 7 upon 16. It's still वही आ रहा है, तो eccentricity तो 7 upon 9 किसी भी तरह से नहीं है. Length of the major axis is 2b squared, so 2 into 9 upon a, so 4, that is 9 upon 2, so a correct है. Length, sorry, yeah, a correct है क्योंकि लेटेस्ट टर्म निकाला मैंने. Major axis की length 8 है, नहीं, semi major axis की, oh sorry, yeah, semi major axis की length 4 होगी, तो फिर ये 8 होगा, correct. So a correct है, c correct है. Question number 7, a, c. Next question. Okay, question 18. If this is equal to r and r denotes the greatest integer less than or equal to r, okay, then oh, अच्छा ठीक है, तो बेसिकली पूछ रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा, देन ठीक है वो ढूंढो, बेसिकली ऐसा बोल रहा है. नो प्रॉब्लम. So it's just 5 plus 3 square root 3. So अच्छी बात ये है कि 3 square root यानी कि square root of 27. Okay, this should be actually in the front. ये सब 3 square root 3 plus square root 5 की power what 9, that is equal to कोई तो भी इंटीजर होगा प्लस f यानी कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका, but 3 square root 3 minus sorry square root 5 यहाँ पे से 5 था minus 5 इसकी पावर 9. ये क्या होता है, इनफैक्ट ये जो चीज है that is just what it's just 2 upon 3 square root 3 plus 5, and of course ये ऑलरेडी 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये चीज 1 से छोटी होगी और उसकी कोई तो भी इंटीजर पावर, well yeah, it's just a fraction, it's equal to f dash.
अब अपन इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल बी नाइस आई थिंक। या फिर अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक सब्ट्रैक्शन बेटर रहेगा क्योंकि इसमें सारे अपन 9 से स्टार्ट करेंगे, राइट? सो इट विल बी लाइक 9c0 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 की पावर 9, 5 की पावर 0 एंड सो वन, राइट? और यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, बस यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो इफ मैं सिर्फ स्टार्ट के दो टर्म्स लिखता हूँ और उसके बाद में अपन देख लेंगे कि अपन क्या करते आता है। 9c1 3 स्क्वायर रूट 3 की पावर 8, 5 की पावर 1 सो वन। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ओके यहाँ पे क्या था 9c0 3 स्क्वायर रूट 3 की पावर 9 माइनस 5 की पावर 0, कि बेसिकली 5 की पावर 0 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर अल्टरनेट। सो 9c0 सॉरी 9c1 3 स्क्वायर रूट 3 की पावर 8 और 5 की पावर 1 सो वन। थिंग इज कि ये जो चीज़ है ये इंटीजर है। सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, सो अगर मैं आई प्लस एफ माइनस एफ डैश करूँ, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, दैट विल जस्ट बी एन इंटीजर इन फैक्ट, राइट? सो इट जस्ट मीन्स कि एफ एंड एफ डैश आर प्रेटी मच इक्वल। तभी हो सकता है ना, क्योंकि एफ माइनस एफ डैश ये -1 to 1 ओपन ब्रैकेट्स, ये इसकी रेंज है। तो फिर इसमें एक ही इंटीजर बचता है जो कि 0 है, और ये जो राइट हैंड साइड वो इंटीजर होनी चाहिए, ये इंटीजर है। तो एफ माइनस एफ डैश शुड आल्सो बी इंटीजर व्हिच मींस इट शुड बी 0। तो ये तो गया, राइट? तो ये इन फैक्ट हाँ, तो दिस इज द सेम थिंग एज दैट। हाँ, ओके। सो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काइंड ऑफ थिंग है, इट्स जस्ट this thing minus that thing basically. Yeah, I plus f and f dash is equal to I basically, and it's also equal to ये सारी चीजें मतलब 3 square root 3 plus 5 की power 9 minus 3 square root 3 minus 5 की power 9 something like that. So basically सारे इसमें के odd kind of terms जिसमें 5 की odd power सारी हो। सो ये तो क्लियर है कि यार ये सारे के सारे जो है वो 5 के मल्टीपल्स रहेंगे, क्योंकि 9c1 इंटीजर होता है। ये गंदी सी चीज भी एक इंटीजर हो जाएगी क्योंकि पावर 8 वगैरह इवन पावर्स, और 5 की कुछ ना कुछ पावर जो कि 0 से बड़ी है, तो इट्स डिविजिबल बाय 5 ऑफ कोर्स। एंड इन फैक्ट क्योंकि सारी ऑड पावर्स है, लास्ट में आएगा 9c9 जब इसकी पावर 9 रहेगी, तो फिर ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 क्योंकि या it is definitely divisible by 2, so it's divisible by 10 I think, right? क्योंकि अपन इनको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, so that makes sense. But the thing is मैं क्या बोल रहा हूँ कि 9c1 9c3 ऐसी सारी पावर्स आएगी, सब में 3 स्क्वायर रूट 3 की कुछ ना कुछ पावर रहेगी, बट जो लास्ट आएगा 9c9 उसमें 3 स्क्वायर रूट 3 पावर 0 है, तो वो 3 का मल्टीपल नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे 3 के मल्टीपल्स प्लस कुछ तो भी जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये पूरा ही 3 का मल्टीपल नहीं होगा, एंड दैट मींस इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। सो B and C are just incorrect. R is an even number, very correct. This is divisible by 10, so A and B, 18th का A and B. Next, question number 19. If the quadratic equation okay has real roots for all real values of A and B is an integer. Oh अच्छा, सारी A की रियल वैल्यूज के लिए इसके हमेशा रियल रूट्स रहने वाले। सो इसके रियल रूट्स होने का मतलब कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो 4a squared minus 4 into b into a minus 1, this should be bigger than or equal to 0 for real roots. But then that just means a squared minus ab plus b is bigger than or equal to 0, और ये सारी a की वैल्यूज के लिए हो रहा है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा या bigger than or equal to 0 है। ऐसा कब हो सकता है? बट ऑफ कोर्स इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो या ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा अगर मैं इसको ग्राफ करूं। सो ये a एक्सिस और ये फंक्शन को f बोल दो, तो फिर ये f एक्सिस जो भी वो रहता होगा या तो इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। दैट्स द ओनली वे, एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है कि वो इक्वल टू 0 देन इट कैन बी इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका? b squared minus 4b, that's less than or equal to 0. In other words, b into b minus 4 is less than or equal to 0. So b belongs to 0 to 4. Actually, this thing 0 to 4. So we got it. The initial of the following is correct. Greatest value of b is 4, very correct. Least value of b is 0, that's also correct. No such value of b is possible. Well, it is possible. Got that. b can be any integer. It can be, wait, no, any integer तो गलत है, नहीं,
क्योंकि बहुत सारे इंटीजर बने, इनफैक्ट इनफिनिट नंबर ऑफ इंटीजर वन छोड़ दिए। तो सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, दैट्स ओनली थिंग, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 20, question number 20 is let f of x be equal to this thing, so the following is correct about f of x. So it's 4 minus x square if x is less than or equal to 0, 2 minus 3x if x is less than or equal to 1. Okay. X equal to 1 is a point of local minimum. Okay, तो इसके मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज वगैरह ढूंढने हैं। ये एक चीज़ है जो कि सिर्फ मुझे एक्स एफ का इसमें काम है, इसमें एफ डैश का काम नहीं है। सो डी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x हैज 3 रियल रूट्स। वेल अपन एफ ऑफ एक्स माइनस 3x की बात करें देन दैट्स जस्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x फॉर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ x squared plus 3x minus 4, right? So in the end it's just negative of x plus 4 into x minus 1 for okay when x is less than or equal to 0. जब यहाँ पे मैं negative 3x रख दूंगा then oh god it's just 2 minus 6x basically. So yeah, 2 into 1 minus 3x when x is what? So x is bigger than 0 and less than or equal to 1. Okay, cool. और यहाँ पे अगर मैं 3x जोड़ देता हूँ, so minus 3x it will just be negative x. So negative of x plus 4 when x is bigger than 1. So इसके solutions देखते हैं. It only has 2 real roots, 3 real roots, तो अपन देखेंगे. So ये कब कब 0 हो सकता है? So this thing is our zeros whatever. Yeah, इसकी जरूरत नहीं थी. थिंग इज कि ये 0 होता है -4 पे और 1 पे। 1 तो चलेगा नहीं क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0 था। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 सॉरी -4 दैट इज अ रूट। यहाँ पे 1/3 एक रूट रहेगी जो कि हाँ काम करती है। सो x इक्वल टू 1/3 इज ऑल्सो अ रूट। और यहाँ पे x इक्वल टू -4 देयर इज नो रूट इन फैक्ट, राइट, क्योंकि ये सिर्फ बिगर देन 1 के लिए काम करता है, राइट। तो 2 रूट्स है। सो या 20 का डी तो करेक्ट है एटलीस्ट। अब इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करते तो इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए। 20 का डी तो करेक्ट है कि एफ डैश की बात करते हैं। एफ डैश इज negative 2x if x is less than or equal to 0. It is negative 3 if x is in this range 0 to x or ये क्या है less than or equal to 1, okay. And it is 2x minus 4, so 2 if x is bigger than 1. तो कब कब ये डेरिवेटिव 0 होता है? ये तो 0 नहीं हो रहा है यहाँ पे कभी भी। So सिर्फ जब x less than or equal to 0 है तब ही हो सकता है। That's when x is exactly equal to 0, तब ये होता है। But when x is exactly equal to 0, ये चीज 4 हो रही है और ये चीज 2 हो रही है, तो वहां पे तो इनफैक्ट कंटिन्यूटी नहीं है। तो इट हैज नो लोकल एक्सट्रीमम, क्योंकि राइट मतलब थोड़ा अजीब नहीं है। यार यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है ना, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे 3-4 एक्सट्रीमम वैल्यूज हो, तो मुझे इसको ग्राफ करना पड़ेगा। दिस इज द वर्स्ट। सो यहाँ पे -2x है, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोस्ट लाइकली, तो ये 4 तक जाएगा। सो समथिंग लाइक दिस when x is okay, that goes to 4, right? That's 4 minus x square और फिर 2 minus 3x इनिशियली वो 2 पे रहेगा and it will still decline। अच्छा, जब वो 1 हो जाएगा then that just becomes -1, so -1 तक जाएगा like this, थोड़ा गंदा बनाएगा like this, okay cool। और 2x minus 4 when x is equal to 1 this just becomes -2, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है and it goes on like this, okay। सो ऐसे कौन से वैल्यूज है जो कि एक्सिमम है? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज तो मैक्सिमा है बिकॉज सारे इसके बाजू के सारे पॉइंट्स इससे छोटे हैं। सो या इट इज इन फैक्ट अ लोकल एक्सट्रीमम, इवन दो वो लाइक कंटिन्यूस, वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है सब कुछ, बट है वो एक्सट्रीमम वैल्यू है। या सो इट डज हैव इन फैक्ट अ लोकल एक्सट्रीमम।
it has, yeah, p x equal to 0 is the point of local maximum, so b works. So d works, b works, और क्या, और minimum है x equal to 1, so a also works because it is correct. It has no local extreme, it does have, come on. So yeah, it's abd basically, abd, abd. Question number 21. If the equation, okay, this represents a pair of lines whose slopes are m and m squared and the value of a is, ugh. So the thing is, तुम constants को ignore करते हो anyway because yeah, अगर तुम ये shift करते हो इन lines को और उन lines को तुम यहाँ पे मतलब zero पे ले आते हो, still slopes तो same रहेंगे, तो तुम सिर्फ ax square minus 6xy plus y square को consider करोगे, और m squared से slopes है. That's not good. So it's like y squared minus 6xy plus m squared, sorry, ax squared. This thing is what? It's y minus mx into y minus m squared x. और जो बाकी प्लस कॉन्स्टेंट्स वगैरह रहेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस c1 प्लस c2, वो ये सारी चीजें देंगे, ये सारे लीनियर और कॉन्स्टेंट्स, और yeah, you get it. So y minus m squared x. So first of all, m cube, that's just a, right? M cube is a, and m plus m squared is 6. So m squared plus m minus 6 equal to 0. So m plus 3 into m minus 2 equal to 0. So m equal to 2 or minus 3. मतलब ये चीज़ हो सकती है, अगर ये 2 है then it's just 8, और अगर ये minus 3 है then negative 27. Okay. So a की वैल्यूज पूछ रहे हैं लोग, so negative 27 हो सकती है या फिर 8 सकती है, so yeah, 21st का B and C. Yes. Question 22. Question number 22, there we go. Consider the matrix equation, this equation where x is a 2 into 2 matrix, all the elements being real. Which of the following may be correct? The equation has exactly two solutions. Okay, the equation where x is a 2 into 2 matrix, all the elements being real. जरूरी बताना है सब. So the following may be correct. The equation has exactly two solutions. X squared is equal to I2. So I into matrix basically. Okay, इसके सिर्फ दो solutions हैं. I mean, okay, this is weird. But first of all, इसका determinant तो 0, इसका determinant जो 1 होना चाहिए या फिर negative 1 भी हो सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम है. ये खुद का inverse भी है. Okay, it's just very weird. इनफैक्ट अगर अपन सिर्फ 2 into 2 की बात कर रहे तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता. लेट्स जस्ट गो फॉर इट, ए बी सी डी, और फिर यहाँ पे भी ए बी सी डी, एंड इट जस्ट गिव्स अस 1 0 0 1. लेट्स जस्ट डू दिस थिंग. सो पहला वेक्टर जाएगा इनमें, दैट विल जस्ट गिव अस व्हाट, well a squared plus bc, okay, and ab plus bd, right, क्योंकि b इसमें दोनों जाएगा और a इसमें जाएगा. That's something like that. Okay, ये पहले वेक्टर के लिए. दूसरे वेक्टर के लिए c इसमें जाएगा, which is equals ac, और फिर यहाँ पे आ जाएगा bc, और d इसमें जाएगा तो फिर just equals cd and d squared, और plus plus of course. And this is equal to 1 0 0 1. Sure. तो पहले तो तुम्हें ये समझ रहा है कि b into a plus d is 0. Similarly, c into a plus d is 0. Okay. Yeah. And a squared plus bc is 1, and d squared plus bc is also 1. Symmetry. Wow. So first of all, this just means कि a squared equal to d squared. तो नाइस. दो चॉइसेस अपने पास में, या तो a इक्वल टू d या फिर a इक्वल टू नेगेटिव b. अगर a इक्वल टू नेगेटिव b है तो फिर ये दोनों इक्वेशंस तो ऑपोजिट हो जाएंगे. अगर a इक्वल टू d है देन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर द सेम थिंग. श्योर. वेट, ओके, या तो a इक्वल टू d इक्वल टू 0 हो सकता है डायरेक्टली, बट इन दैट केस bc मस्ट बी 1. तो ठीक है.
तो बहुत सारी चॉइसेस में, ठीक है। तो ये जो चार इक्वेशंस आएंगे और ये अपनी एक मैट्रिक्स ए बी सी डी लाइक दिस, इज दैट राइट? ठीक है, इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो कि ये चार इक्वेशंस को फॉलो करती हो, दैट विल वर्क इन फैक्ट। वेल आई मीन ये जो पूरा इक्वेशन है इसको लिखना जरूरी है क्या? नहीं। आई रियली थिंक कि ए प्लस डी जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि लुक, अगर ए प्लस डी जीरो नहीं है देन दैट मीन्स कि डी और कि ऑफ कोर्स ए इज इक्वल टू डी, और ए और डी वो जीरो नहीं है, लाइक या और बी और सी जो है दोज विल बी, मैं क्या कर रहा था, या if a is not equal to negative c, then that means कि a is sorry not equal to negative d, and that means a is equal to d is not equal to 0, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए तो फिर ये इक्वेशन तो अपने आप ट्रू, मतलब ये a equal to negative d अपने आप ट्रू हो जाएगा, which doesn't make sense कि अपन ने वो इनिशियली सेट किया कि नहीं होना चाहिए। then a equal to d अगर होता है, तो in that case अगर a is not equal to negative d then this thing cannot be zero, so b and c should be zero। तो इसका मतलब है कि a और d जो है those should be 1, so a equal to 1, d equal to 1, that's one solution। या फिर a equal to -1, d equal to -1, b equal to c equal to 0, b equal to c equal to 0, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। ऑलराइट, दूसरा एक सोल्यूशन है कि a is equal to negative d हो जाए। if a is equal to negative d तो of course उनका स्क्वायर सेम रहेगा, and let's say it's equal to k, नहीं, ओके देन a square plus bc equal to 1, and ये जो दो इक्वेशंस है इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को नहीं मिल रही है, so all we know is just that a squared plus bc should be equal to 1 and a squared should be equal to, sorry, a is equal to negative d, yeah, ओके देखते हैं। सो ए और डी ऐड होके जीरो हो रहा है, बहुत अच्छा, इसमें भी जीरो हो रहा है। इन दोनों केसेस में व्हाट शुड हैपन इज दैट ए स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर प्लस बी सी, सो ये टाइम्स ये, दैट शुड बी 1, इज दैट थिंग। सो 2 + 3 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, और फिर प्लस बी सी, सो 4 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ये चीज, दैट विल बी लाइक 2 स्क्वायर रूट 6 पहला, एंड -4 है, yeah, that is in fact 1, so yeah, C is very correct solution। और ये चीज इस केस में हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, तो फिर 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 6, 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4, वो भी सही है, इनफैक्ट दोनों बहुत करेक्ट है, यस। So C and D are a solution, yes। The equation has exactly two solutions, no, no, it has at least 4 solutions, because अपने को 4 solutions मिल गए ऑलरेडी। इनफैक्ट इसके इन्फिनिट solutions हो सकते हैं, क्योंकि जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे ये चल सकता है, बट तुम कोई भी और D और C ले सकते हो ना, ताकि वो सेम वैल्यू दे, तो इन्फिनिट solutions, equation has infinitely many solutions, so B चलेगा, C चलेगा, D चलेगा, गुड। नेक्स्ट question number 23। So 23 is if the quadratic equation, this equation has exactly one common root, okay, these two equations have exactly one common root, then the following is correct। oh, ax square plus bx plus c equal to 0 है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उल्टा कर दिया इन लोगों ने। लोग ये तो पूरा क्लियर है कि इसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे उसके रेसिप्रोकल्स जो रहेंगे वो इसके सॉल्यूशंस है, क्योंकि दिस इक्वेशन इज प्रीटी मच c into 1 upon x squared plus b into 1 upon x plus c equal to 0, राइट? ये जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉरी ये जो इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दैट मीन्स कि 1 upon अल्फा और 1 upon बीटा इसके सॉल्यूशंस है, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है वही दो सॉल्यूशंस है सिर्फ, जब अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स। देन दैट मीन्स कि अगर इनके इसमें कॉमन रूट है, से अल्फा इसकी जो रूट है और 1 upon अल्फा इसकी जो रूट है वो दोनों सेम चीज है, मतलब कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, सो +1 या फिर -1 होनी चाहिए वो रूट, राइट? सो या तो a + b + c = 0 ऑफ कोर्स, या फिर अगर नेगेटिव होगा तो फिर a - b + c = 0, इनमें से दो करेक्ट हो सकते हैं।
Okay, but wait. Okay, wait. This is a different thing altogether. I mean, we know कि इसके solutions 1 upon alpha और 1 upon beta होने चाहिए. Okay. Yeah, I mean that's obvious. और एक exactly एक solution है. मतलब कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, जो दूसरी रूट है वो 1 या फिर -1 नहीं हो सकती. ओके, दैट मीन्स अल्फा बीटा जो रहेगा दैट दैट कैन नॉट बी विद मैग्नीट्यूड 1, राइट. तो वो +-1 नहीं हो सकता. दैट मीन्स कि ए और सी इक्वल तो नहीं हो सकते. सो सी इज जस्ट इनकरेक्ट. कैन बी बी जीरो? नो, क्योंकि अगर अल्फा 1 +1 - 1 है तो अगर बी को 0 होना है मीन्स कि बीटा को भी +-1 होना पड़ेगा, राइट. अपोजिट मतलब -+1. बट अपने को बोला एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट. सो फिर बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है. क्या ये करेक्ट है? अगर 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 वो 1 उसकी रूट होती देन अल्फा स्क्वायर इज 1 श्योर. सो come on, a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 या फिर a माइनस बी माइनस सी. यार ये तो बहुत एम्बिगुअस टाइप का हो गया कि ए और बी में से कुछ भी एक ही करेक्ट होगा ना. अल्फा या तो 1 है या फिर -1 है. तुम दोनों साथ में नहीं रख सकते. दिस डजंट मेक सेंस. अगर बी 0 होता तो फिर बहुत सकता था कैसे दोनों साथ में करेक्ट हो रहे. बट अभी करेक्ट नहीं हो गए क्योंकि उन्होंने बोला एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट. सो आई डोंट नो, ए और डी दोनों को मैं चूज कर लेता हूँ. बट टेक्निकली ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 24. A real valued non-zero function satisfies this. Which of the following may be correct? So real valued non-zero function satisfies f of x equal to f of x plus y f of negative y. Let x plus y be equal to a and negative y be equal to b. Then that means x is just a plus b, right? तो basically ये जो पूरा equation है उसमें लिख सकता हूँ f of a plus b is equal to f of a times f of b. और क्या है? हाँ, बस इतना ही दिया है, राइट. हो सकता है कि तुम्हारा जो ये फंक्शन हो, लेट्स से ये maybe a positive, maybe f is always positive. I don't know. क्या मुझे नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड है नेचुरल लॉग लेने के? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. बट when all three of them are positive, what we can say is the natural log of f of a plus b is equal to natural log of this is very bad. ठीक है, natural log of f of a plus natural log of f of b. तो natural log of f इस फंक्शन को मैं g बोल देता हूँ. that just means कि g of x is just some linear function like this without any constant. So yeah, that means f is e power kx. In other words, it's a power x. और अगर ये नेगेटिव वगैरह रहा तो भी ये सॉल्यूशन काम आता है. So I think this makes sense. Yeah, it's just a power x. It cannot be that plus some constant. Yeah, right. Okay, so you got it. और क्या बोला है? f dash of 0 which is just a power x natural log of a at 0. So natural log of a is equal to 1. Then yeah, a is equal to e. So f is just e power x. Which of the following may be correct? F dash of x and f of negative x equal to 1. Very correct. ये भी correct है. ये correct नहीं है, बिल्कुल नहीं है. And f dash of x equal to f of x. Very correct. D is also correct. C is not. B and A are also. So A, B, D. Next. Question number 25. 25th है, a circle is touching the lines. This locus of its center is.
दो लाइंस टच कर रहा है एक सर्कल, लोकस ऑफ इट सेंटर। आई मीन कम ऑन, यू नो कि उनके सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स पे ये रहने वाला है। सो L1 इक्वल टू L2 या फिर L1 equal to negative L2, right? That's just the way it is. L1 equal to negative L2. I mean, is that actually? Yeah, yeah. L1 equal to L2 and L1 equal to negative L2. जहाँ पे L1 L2 normalized normalized sign distances है. So yeah. So what we are saying is कि x minus 2y minus 3 upon square root of 1 plus 4 negative 5 is equal to actually plus minus plus minus uh what 2x plus y minus 1 upon, hey, the same stuff, square root of 5. मतलब होना ही चाहिए था वैसा, नहीं तो तुम्हारे इस टाइप के नहीं आते थे ना ऑप्शंस। सो क्या 1 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, फिर +-2 प्लस माइनस 1 इंटू वाई, -3 माइनस प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, लाइक दैट। क्योंकि नो सॉरी 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 एक्स के लिए अब 2 था तो अपन ने प्लस माइनस लिया था, फिर वाई के लिए प्लस माइनस लिया, फिर 1 के लिए माइनस प्लस लिया पड़ेगा। या इन फैक्ट दैट्स करेक्ट। सो लेट्स डू इट। एक रहेगा जब अपन प्लस लेंगे दैट जस्ट मींस कि 3x, और यहाँ पे प्लस रहेगा दैट जस्ट मींस माइनस y, और यहाँ पे फिर माइनस होगा दैट मींस -4 इक्वल टू 0। और दूसरा है कि जब अपन माइनस लेंगे -x -3y, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो फिर -2 इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स x + 3y + 2 इक्वल टू 0। ये एक रहेगा और ये एक रहेगा, दैट्स इट। So 3x minus y minus 4 equal to 0. Okay, and x plus 3y plus 2. So A and C are the way to go. Alright, next. 26. Equation of normals drawn to the parabola. This parabola from the point something. What? Normals drawn to the parabola from this point. Seriously. Okay, so नॉर्मल कैसा रहता है, y इक्वल टू -tx + 2at + 80, राइट? दैट्स द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। और इन दिस केस इन फैक्ट ये थोड़ा सा अलग है, इट्स जस्ट 4 × x - 1 ओवर हियर। सो y इक्वल टू इनफैक्ट t के अच्छा मैं डायरेक्टली m यूज करता, m x x यहाँ पे मैं लिखूंगा x - 1, a is 1, so 2 times m because sorry -2m, a is 1, right? Yeah, and then -m cubed basically ये अपना इक्वेशन रहेगा फॉर, या सो बेसिकली इसमें लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx -m - 2m -3m -m क्यूब। और ये लोग बोल रहे हैं कि 6,2 इज अ पॉइंट ऑन दिस नॉर्मल, नो बिग डील। सो इसमें डाल दो 2 इक्वल टू 6m - 3m, दैट इज 3m, so 3m -m cubed, so m cubed -3m plus 2 equal to 0। hey, हमने कभी तो भी देखा हुआ सा है, because you know what, yeah, then देखा हुआ है। You can write this as m² - m - 2m plus 2 equal to 0। in other words m into m² - 1, which is m - 1 into m plus 1, and -2 into m - 1 equal to 0। so either m is equal to 1 or m² plus m minus 2, wait, what, seriously, m² plus m -2 equal to 0। this just means m plus what was this, m plus 2 into m minus 1 equal to 0। so या तो m equal to 1 है जो कि यहाँ से भी आ रहा है, या फिर m is equal to -2। so 1 and -2 are the only two solutions। no, this doesn't make sense। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। no way, how can that even be? -2 common to well, yeah, that's correct, but
Look, one clearly is a solution is because my derivative is just 3m squared minus 3. So, oh yeah, it does in fact have two solutions only. Uh, okay, fine. So yeah, कौन सा क्या था अपना? Right, equation of the normals drawn to the parabola. So m is either 1 or -2. So उसने ये put कर देगा and we will get normals. And just delete all of this. So जब m equal to 1 है, at that point ये हो जाएगा y equal to x minus 3 minus 1 which is x minus 4. जब ये minus 2 है, then that's just negative 2x plus 6 plus 8. So it's negative 2x plus 14. So x minus 4 and 2x plus 14. तो अपने को नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना है, जस्ट 2x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये एक सोल्यूशन रहेगा, एंड x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक सोल्यूशन रहेगा. Yeah, so 2x plus y equal to 14, that's the only solution that we actually got. Yeah, and x minus y equal to 4. In fact, yeah, वो भी एक solution है. X minus y is 4. So A and D are the to go. Question number 27. 7 is. Question 27. What is it? If this is equal to 1, then cosine x can have the value equal to. So sine x plus sine 2x plus sine 3x plus square plus cosine x plus cosine 2x cosine 3x square. Okay, seriously, that's equal to 1. Not good. Okay. ये कैसे करूँ मैं? You know, you can always use that summation formula for this thing, but what if x is 0? Well, okay, x equal to 0 doesn't work. I mean, okay, sine x equal to 0, वो सारी चीज काम नहीं करती है. That means we can actually keep going. So yeah, we can write this thing as sine of n d by 2. 3 है तो फिर 3 into d by 2 क्या है? X upon 2. Yes, so just 3x upon 2 upon sine x upon 2, right? And sine of a plus l, so it's just 4x add upon 2 which is sine of 2x. So ये पहली चीज का स्क्वायर और सिमिलरली दूसरी चीज का स्क्वायर होगा. So that just means it's just ये पूरा स्क्वायर sin square of 2x plus cosine square of 2x. That's equal to 1. ये तो गया. Then what you are saying is कि sine squared of 3x upon 2 is equal to sine squared of x upon 2. So clearly x equal to 0 solution है, but we don't want these to be 0. So let's see, 3x upon 2 is equal to n pi plus minus x upon 2. Okay, अगर मैं प्लस लेता हूँ then that just means x is equal to n pi, which is stupid. No, फिर मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा. So when it's negative x upon 2, then this just becomes 2x equal to n pi. So x is n pi upon 2. Okay. Yes, n pi upon 2. So clearly n pi टाइप के फॉर्मेट काम नहीं करेंगे. So it's like x equal to odd pi upon 2. Only those will work. Right. So sin x to have a 1 minus 1 square. In any case, cosine x to 0 होगा ना. So 27p. Yes. Question number 28. Let A and B be events such that probability of A, okay, उसका जो, okay, fine. That's 4/5. Probability of B is 1/3. Probability of A given B is 1/6. तो अगर मैं यूनिवर्सल सेटअप क्रिएट किया, यहाँ पे A और B दो इवेंट्स हैं. A ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है. दैट इज ये जो पूरा एरिया रहेगा प्लस ये वाला पूरा एरिया, दैट इज 4/5. ओके, कूल. प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज 1/3. तो फिर ये जो पूरा रहेगा दैट्स जस्ट 1/3. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, सो ये एरिया अपॉन ये पूरा एरिया, हाँ, दैट थिंग इज 1/6. और अगर मैं A कॉन्जुगेट की प्रोबेबिलिटी तो फिर A की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये जो पूरा रहेगा दैट विल जस्ट बी 1/5, राइट? Probability of B is 1/3.
तो मैं इंटरसेक्शन वगैरह का ना कुछ नहीं है. Okay, wait. Agar probability of B 1 upon 3 and A given B is 1 upon 6, that just means the probability of A intersection of B, मतलब ये जो A रहेगा अंदर का, that's just 1 upon 6 into 1 upon 3, and which is 1 upon 18. तो ये चीज 1 upon 18 है. फिर probability of what A conjugate given B, यानी कि ये जो बचा हुआ A रहेगा, that will just be 5 upon 6 and that times this thing, so 5 upon 18 ये बची probability. और A जो रहे मतलब ये जो एरिया रहेगा that will just be, तो A की पूरी probability क्या थी 1 upon 5, so 1 upon 5 minus 1 upon 18, राइट. बट अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ A इंटरसेक्शन B चाहिए, इनफैक्ट अपने को यूनियन भी चाहिए पूरा उसका. ओके, यू आल्सो वांट द यूनियन एंड स्टफ, A यूनियन B. लुक, A का जो कॉन्जुगेट सेट है उसकी अपनी को प्रोबेबिलिटी पता है, दैट्स 4/5. उसमें का 5/18 पार्ट निकाल लो तो फिर तुम्हें बचा हुआ सब कुछ मिल जाएगा. तो इट्स जस्ट 1 माइनस, या फिर तुम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो 1/5 प्लस 5/18, दैट इज A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी, which is definitely not having 15 in the end. That doesn't make sense. Probability of B given A, that is 1 upon 18 upon ये चीज. Okay, 1 upon 18 upon ये चीज, so 1 upon 18 upon 5 minus 1, which is 5 upon 13, so that's definitely not this. So सिर्फ A सही लग रहा है क्योंकि A intersection B is 1 upon 18. Yeah. This actually makes sense. That's 1 upon 3, and then that minus 1 upon 6. Wait. 1 upon 3 times 1 upon 6. So, yeah, so it's 1 upon 18. And then 1 upon 3 minus 1 upon 18. So it's just 6 upon 18 minus 1 upon 18 is 5. Yes, it's correct. So only A is the way to go. A and B are independent. I mean, you could say so. Because हाँ, जब A होने वाला है then you may or may not have B. तो A होने का B पे ऐसा कुछ खास इफेक्ट तो नहीं है, right? So you can say okay, A and B are independent. But then of course वो है कि अगर B है तो probability of A थोड़ा सा चेंज हो जाती है. So when you have B, probability of A is 1 upon 6. In total probability of B, sorry, of A 1 upon 3 होनी चाहिए थी, अब डिक्रीज हो गई, and that kind of thing does happen. So I don't know, I'm gonna go with it. D is also correct, I think. Right, एक के होने का दूसरे कोई इफेक्ट नहीं है. That's how it should be, I think. Question number 29. In context of the equations, okay, the following is not correct. Ax squared plus 2bx plus c 0. Bx squared plus 2cx plus a 0. Okay. All of the equations may have imaginary roots. अच्छा, इनकी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? So discriminant of the first equation is, well, okay, discriminant of the first equation upon 4, that is b squared minus ac. Discriminant of second equation upon 4, that is c squared minus ab, or you get the idea. Discriminant of 3 a squared minus bc, something like that. Right. So okay, what about this? All of the equations may have imaginary roots. So अगर ये तीनों की तीनों less than 0 हो गए, then their addition will also be less than 0. But that doesn't make sense because you know कि summation of a squared minus summation of ab, that is basically just half summation, 2 summation of a squared, which is summation of a squared plus summation of b squared, if you can think about it like that, minus summation of 2ab. ये भी देखा सर, हाँ पता है, a minus b का square. So that can be equal to 0 or bigger than 0. It cannot be less than 0. So A to incorrect है. All of the equation may have real and equal roots. Yeah, sure, that can happen. You can just have A, B, C all being equal.
That cannot happen. Okay, this is weird. No, that cannot happen. All of the equation may have real and distinct roots. Okay, let's say without first generality A is less than B is less than C. Then that means, oh, ABC just belong to real. We don't know if it's actually negative, positive, whatever is going on. तो मैग्नीट्यूड वाइज ये डिफर हो सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर और या आई थिंक इट्स पॉसिबल. सो लेट्स से आई डोंट नो -1 0 1 क्या ये काम करता है? या आई मीन लेट्स से ये बी है तो फिर लाइक 1 minus all that stuff. Yes. And 6 minus AB, that is 1, and this thing is also 1. So this works out. Yes. So of course they can have all real and distinct roots. They can also have rational roots. Wait, हाँ अभी तो अपन ने किया इसके जो डिस्क्रिमिनेंट्स आए वो सारे के सारे 1 आ गए. And yes, it is possible, quite possible. All of the equations may have real and equal roots, so that's also possible. जब ये तीनों equal, when A is equal to B. Oh no, it cannot be. क्योंकि अगर equal roots आ गए मतलब ये सारे सारे 0 हो गए, that just means A has to be equal to B and C. So no, so only C and D are correct. A function satisfying the differential equation is such that y approaches 0 as x approaches infinity. Then, okay, dy upon dx sin x plus y cosine x plus sin squared x upon x squared equal to 0. Assume वो function continuous है. Okay, तो sin x minus y ये तो okay, ये चीज अपने को समझ रही है. It's just the derivative of sin x times, wait what, no, cosine x का डेरिवेटिव sin. okay, ये अजीब हो रहा है. Negative cosine x, how? No, not the best thing. Okay, negative y से अगर मैं e पावर समथिंग से मल्टीप्लाई कर डालता इसको तो फिर और अजीब होता ना. Yeah. Okay, why is there x squared over there? Sin squared x. अच्छा, अगर मैं sin squared x और डिवाइड करूँ तो it will just be cosec x and यहाँ पे आ जाएगा minus cot x cosec x, which makes sense I think. So it's just the derivative of, so it's dy upon dx cosec x minus y cot x cosec x, right, and plus 1 upon x squared equals 0. So the thing is कि this thing is just the derivative of cosec x times y I think, and that is equal to, so यहाँ पे minus था कि plus था ना, so negative 1 upon x squared, right. So basically 1 upon sin x into y, that is equal to इसका integral, which is, so it's x power -2, sorry, yeah, and that's just 1 upon x plus some kind of constant. Sure, that's how it is. So y is sin x upon x plus some constant times sin x. Got it. So limit as the limit as x tends to 0. No, x tends to 0 नहीं. Okay, y tends to 0 as x tends to infinity. So as x tends to infinity, this thing is going to be approaching 0 anyway. But अगर c नॉन जीरो रहा तो फिर ये चीज समथिंग लाइक, या ये बहुत वेरी करेगी कंटिन्यूसली कि, तो फिर समझ कि c should be 0. That's the only way for this to work. Then this makes sense. Okay, so y is just sin x upon x. Limit as x tends to 0 of f of x is 1. Very correct. A works. Integration from 0 to pi upon 2 f of x dx is less than pi upon 2. Less than pi upon 2. But sin x is definitely less than x, right? In all kind of ranges, at least for positive ranges. So yeah, मतलब 0 to pi by 2 ऐसा होता ही है ना कि sin x is less than x. Then yeah, then that means ये जो integral रहेगा that will be less than integration of 1 from 0 to pi upon 2, which is in fact pi upon 2. So B is also correct.
0 to pi upon 2 is greater than unity. It's greater than unity. Sin x upon x. Yeah, so x is less than 1. That means 1 upon x is bigger than 1. तो ये जो इंटीग्रल रहेगा sin x upon x is just bigger than sin x for sure. So this integral from 0 to pi upon 2 of f of x that's bigger than 0 to pi upon 2 of just sin x. और वो इंटीग्रल जो है वो 1 देता है. And that means C is also correct. C is correct, B is correct, f is an even function, that's also correct. So yeah, A, B, C, D, all of them. Okay, I think that's enough. I'll see you guys in the next video.